संसद के बजट सत्र का शुरुआती दिन। संसद भवन से मैं मनीषा दुबे अपने साथी कमेंटेटर श्री सुनीत टंडन के साथ दूरदर्शन की ओर से आप सभी का स्वागत करते हैं। महामहिम राष्ट्रपति महोदय श्री के नारायणन जी का आगमन हो चुका है। हर साल की तरह इस साल भी बजट सत्र की शुरुआत महामहिम राष्ट्रपति के नारायणन जी द्वारा संसद के केंद्रीय कक्ष में संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करने से होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार राष्ट्रपति के अभिभाषण में केंद्र सरकार की पिछली एक वर्ष की उपलब्धियों का बखान होगा, उसकी भावी दिशा का संकेत मिलेगा और अभिभाषण के तुरंत बाद दोनों सदन मिलेंगे। Good morning, viewers, and welcome to this live telecast brought to you by Doordarshan of the President's address to a joint sitting of the two houses of Parliament in the Central Hall here in New Delhi to mark the commencement of the budget. The President has arrived and is being taken in procession to the all members of Parliament gathered together. The President was received a short while ago by Vice President Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, Minister Pramod Mahajan, and also the Secretary Generals of the two houses of Parliament, amongst other dignitaries. And now, the trumpet call marking the arrival of the President in the Central Hall. All the members on their feet. This is a very significant session of Parliament, and we are all looking forward to the President's address prepared by the government. Honourable members, it gives me great pleasure to welcome you to this first session of Parliament in 2001. I extend to you my best wishes for the successful completion of the budgetary and legislative business ahead. This session of Parliament is being held under the grim shadow of the devastation caused by the earthquake
that struck Gujarat last month. It claimed thousands of lives, destroyed public and private property with thousands of crores, and left many people homeless. Today we pay our heartfelt condolences to the bereaved families. We assure them and all others affected by the earthquake that they are not alone in this hour of loss and suffering. The entire nation has rallied behind and demonstrated its sympathy and solidarity. The tragedy has evoked the response of governments, NGOs, and multilateral agencies across the world to contribute generously to our national effort. My government and the people of India express their deep gratitude to all of them. The Union government and the government of Gujarat have been working closely in the relief and rehabilitation operations throughout the state. I compliment the Jawans and officers of the Army, the Air Force and the Navy for their outstanding role in this effort. The governments of all other states have also come to the aid of Gujarat. Indeed, it is a tribute to the coordinated effort of all central and state agencies that power, telecommunication, air, rail and road links were restored in such remarkable speed. The commendable contribution of a wide range of voluntary organizations have greatly supplemented and strengthened these efforts. Thousands of volunteers have been working tirelessly to bring succor to the survivors. On behalf of this august house, I applaud them for their devoted and untiring activities. In times of crisis, external or internal, our countrymen have always shown exemplary unity and voluntary activism. We should nurture these virtuous qualities so that they influence all aspects of our national life at all times. The catastrophe in Gujarat, as also the super cyclone in Orissa in 1999 and natural calamities in other parts of the country in recent years, have once again highlighted the urgent need to expand and modernize our disaster management capabilities. We need to urgently revise and update the rules and regulations governing construction and town planning. We also need to enforce them with rigor and ensure that stern action is taken against their violators. Beyond this, we must also have a comprehensive disaster management plan at the center, states, districts with specific long-term and short-term objectives. It must be our common endeavor to ensure that life after a calamity is better than before it. I am happy that the government convened an all-party meeting to discuss the Gujarat earthquake. Following up on the consensus of that meeting, a national committee on disaster management has been set up under the chairmanship of the Prime Minister. It comprises inter alia representatives of national and state parties. It will suggest short, medium and long-term steps for relief, rehabilitation and reconstruction activities in Gujarat. It will also deliberate on the necessary institutional and legislative measures needed for an effective and long-term strategy to deal with national calamities in the future. In addition, it will look into the parameters that should define a national calamity. Based on the recommendations of this committee, the government will consider setting up a permanent national disaster management authority with suitable statutory authorities in the states. Throughout India's history, pilgrimages have played a unique role in tying our people together with the bonds of religious piety and national unity. The Mahakumbh at Allahabad, which witnessed one of the largest gatherings of humanity, is in a spectacular act of faith, demonstrated this yet again. I compliment the Uttar Pradesh government, the railways, and all other governmental and non-governmental agencies for their coordinated efforts at smoothly managing this mega congregation
which has impressed the whole world. This year marks the conclusion of the Golden Jubilee celebrations of our Republic. As years go by, both August 15, 1947 and January 26, 1950 will recede more and more into history. They may seem distant, especially to the youth of India, who constitute nearly 37% of our population. However, time cannot weaken the import of these two defining dates in our country's long history. The sacred flame of freedom and democracy will continue to illuminate India's journey in the new century and the millennium. This Parliament, the highest elected body of the world's largest democracy, should resolve to contribute its utmost to the furtherance of the republican values enshrined in our Constitution. While all of us are proud of India's achievements since independence, we are equally aware of the enormous challenges that still confront us. The cautionary words of Dr. Babasaheb Ambedkar should guide us in our march forward. While presenting the draft of the Constitution, he had said with great fervency, I quote, "On January 26, 1950, we are going to enter into a life of contradictions. In politics, we will have equality, and in social and economic life, we will have inequality. We must remove this contradiction at the earliest." Unfortunately, the contradiction that Dr. Ambedkar and many other stalwarts of the freedom movement had warned us about continues to mar our national life even today. Therefore, all of us should hold our freedom and democracy to be incomplete until we erase this contradiction and make our great nation a land of justice and equal opportunity for its billion-plus citizens. One of the major gains of democracy in India is the ever-growing active participation of women in the political process, not only as voters but also as elected representatives and bearers of executive responsibility. At the same time, this positive experience has made both women and men acutely aware of the underrepresentation of our sisters in Parliament and state legislatures. The Constitution 85th Amendment Bill 1999, which was a response to this all-round support for women's political empowerment, has already been introduced in Parliament. It is unfortunate that this bill has not yet been enacted. I urge all political parties to arrive at a consensus and pass this bill during this session. This should be a fitting tribute by India's Parliament to the Year of Women's Empowerment, which we are observing this year. Last fortnight, India launched its biggest ever census operation. Our population has now crossed 1 billion. Last year, we adopted a comprehensive national population policy. This policy has three principal objectives: to reduce the rate of growth, stabilize the absolute size, and provide welfare and environmental opportunities for the entire population, especially women. To realize these objectives, it is necessary to evolve in concert with the states a set of incentives and disincentives. These should be enforced in a non-coercive manner with the fullest cooperation of social, cultural, and religious institutions. India's external and internal security is the highest priority for the government. We are committed to further strengthening the country's strategic response capability to meet any eventuality. A group of ministers has examined the recommendations of the Kargil Review Committee on the national security question and will soon submit its proposals. The maiden flight of the indigenously developed light combat aircraft took place successfully last month. The nation commends the dedicated work of our scientists and engineers for this aeronautical achievement, as also for their path-breaking accomplishments in missile development. The government is pursuing a multi-pronged strategy to bring peace and normalcy in Jammu and Kashmir. As part of this, it launched a major peace mission in November 19, 2000
by announcing unilateral non-initiation or combat operations in the state during the holy month of Ramadan. This bold initiative was extended twice up to February 26, 2001. As anticipated, this was warmly welcomed by the people of Jammu and Kashmir, who are longing for an end to the militancy and violence in their beautiful state. The international community has also given overwhelming support because it sees in it yet another demonstration of India's sincere commitment to a peaceful and permanent solution of the Kashmir issue. It is a matter of deep distress and concern to all of us that Pakistan has not reciprocated India's sincerity. There has been no let-up in, much less an end to, cross-border terrorism and vicious anti-India propaganda originating from Pakistani soil. Many innocent lives continue to be lost every day to acts of barbarism by those who cloak them in the garb of jihad. Pakistan bears a responsibility for these acts against humanity, which are a travesty of religion. Its protestations about its eagerness to resume talks with India will not carry conviction so long as it allows the terrorist guns and bombs to do the talking. Should Pakistan create an atmosphere conducive for meaningful talks, India will be more than ready to resume the dialogue process. The army and our paramilitary forces are working under trying circumstances, and the nation appreciates their supreme determination and sacrifice. Action against terrorist organizations will continue relentlessly. Militancy in Kashmir, in Jammu and Kashmir, is now increasingly confined to foreign mercenary groups. This has widened the scope for democratic activity in the state. The people of state participated enthusiastically in the recent panchayat elections. I reiterate the government's readiness to have talks with every group in the state that abjures violence. There is relative improvement in the situation in the northeast. Peace and normalcy in this strategic region require both political stability and faster socio-economic development. This has to be combined with the firm action against militant and extremist outfits. The special developmental package devised for the Northeast is being speedily implemented. Substantial developmental resources flow into the region each year. However, their impact on the ground is not commensurate. I urge the state governments to ensure that there is no mismanagement or leakage of public funds. For this, they should carry out effective decentralization, strengthen democratic institutions, and increase participation of people's organizations. They must also protect the minorities in their respective states. The government is uncompromising in its secularism. The levels of communal and caste violence have continued to decline. The improvement is especially remarkable in view of the unceasing efforts from across the border to foment communal trouble in India. We have stepped up our vigil against communal extremist organizations. The law will take its course unsparingly and impartially against those who seek to create trouble. One of the momentous events to take place last year was the creation of 3 new states, namely Chhattisgarh, Uttaranchal and Jharkhand, taking the number of states in the Union of India from 25 to 28. The creation of these new states has met the long-standing aspirations of their people. It will also hasten their socio-economic development. I join all of you in extending warm felicitations to these new states. Center-state relations continue to be harmonious. The Interstate Council and its Standing Committee has been meeting regularly. This augurs well for our democracy and our federal polity. The Chief Ministers' Conference on Internal Security in August helped in the evolution of a better understanding and greater coordination among the states
and between the center and the states in dealing with the militancy, terrorism and organized crime. The central assistance for modernization of state police forces has been increased from rupees 200 crore to 1,000 crores a year for the next 10 years based on matching contributions by the states. The 11th Finance Commission has submitted its report, which has addressed the serious issue of worsening fiscal health of state governments. Among its recommendations is a monitorable fiscal reform program to reduce their revenue deficits and bring about fiscal corrections in a phased manner. The Fiscal Responsibility Bill seeks to achieve the same positive objectives at the center. The process of economic reforms in India is now a decade old. During this period, several governments at the center and in the states belonging to various parties and alliances have carried this process forward. The agenda of reforms has thus been sustained by a growing national consensus. This consensus needs to be broadened and strengthened, guided always by the criteria of whether or not specific policy changes promote the interest of the country and the common man. The scope of the reform process itself needs to be widened so as to fortify self-reliance, create more employment opportunities, and to rapidly remove poverty. The past decades' experience has clearly shown that economic reforms can yield desired results only if they are fully complemented by administrative, judicial, educational and labor reforms. Each of these reforms is a part of an integral national endeavor that seeks to convert immense potential of India into a renaissance reality in the 21st century. India is among the 10 fastest growing economies in the world. Our economy has grown at an impressive annual rates of between 6 and 7% during the past 3 years. This despite formidable challenges on the external front as well as droughts, floods and other natural calamities in the several parts of the country. However, we need to set an ambitious target of 9% annual growth for the next 10 years to double our per capita income and halve poverty. Today's problems can be turned into opportunities for a big surge forward if the center and state governments, all political parties and the people adopt faster and more balanced development as a common mantra of the decade. Agriculture continues to provide livelihood for most of our people. Our hard-working Kisans deserve applause for the record food grains harvest of 209 million tons last year. Our buffer stock has crossed an all-time high of 40 million tons. Today, India has become the largest producer of milk and the second largest producer of rice, wheat, fruits and vegetables in the world. We are also the world's 5th largest producer of eggs and the 6th largest producer of fish. Accelerated and sustainable development of agriculture is a high priority of our government. The National Agricultural Policy was announced last year. It sets a growth rate of over 4% a year based on efficient harnessing of our soil, water and biodiversity resources. It also seeks to promote higher public and private investments in agriculture, irrigation, agro-processing, distribution and marketing. Organic farming and biofertilizers will be especially encouraged. The National Storage Policy announced last year will facilitate private investment in building state-of-the-art silos for integrated bulk handling, storage and transportation of food grains. To protect our farmers against unfair global competition, import duties
were increased in many agricultural commodities, including edible oils. The government has begun phased decontrol of sugar by reducing the proportion of levy sugar from 40% to 15%. During last year's Kharif season, 65 lakh farmers were insured under the National Crop Insurance Scheme. So far, 105 lakh farmers have been given the Kisan Credit Card. The policy of emphasizing higher farm production through subsidy on inputs rather than through building new capital assets in irrigation, power and rural infrastructure has considerably reduced public investments in agriculture. Besides inducing inefficient use of scarce resources, this has also degraded soil, water resources, canals and roads. In turn, this has caused farm productivity and the Kisan's profitability to stagnate. This vicious circle needs to be turned into a virtuous circle of greater efficiency and productivity to benefit both the Kisans and the consumers, especially the poorest among them. Poor road connectivity is the biggest hurdle in faster rural development. The Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana seeks to provide all-weather roads to over 1 lakh unconnected rural habitations with a population of more than 500 in the next 7 years. For the first time, the centre has made a provision of rupees 2,500 crore a year for improving rural roads. This centrally sponsored scheme would be effectively implemented with the fullest participation of state governments and Panchayati Raj bodies. Steps have been initiated to bring all watershed and area development programs implemented by different ministries under a single umbrella. Although considerable resources have been spent so far on drinking water schemes in rural areas, these have not yielded tangible and expected benefits owing to lack of clarity on ownership and poor planning maintenance. Therefore, a new initiative has been introduced initially on an experimental basis in many districts to institutionalize community development participation in implementing, managing, maintaining the rural drinking water schemes. Keeping in view the consensus on better targeting of food subsidies, government has increased the monthly allocation of food grains to below poverty line families from 10 kilos to 20 kilos at half the economic cost. The Antyodaya Anna Yojana, launched in December, shows the human face of our economic reforms. It will provide 25 kilos of food grains each month to 1 crore poorest families in the country at still lower rates of 2 rupees a kilo for wheat and 3 rupees a kilo for rice. Because of government's policies, the prices of most essential commodities have remained reasonable. No shortage of any commodity has been reported from any part of the country. No shortage of any commodity has been reported from any part of the country. Expanding and modernizing India's physical infrastructure is urgently needed for faster and more balanced economic growth. We have made significant progress in some areas in recent years, although critical bottlenecks remain in several other areas. I am happy to inform you that the government has resolutely pursued reforms in the telecom sector. Several important milestones indicated by the new telecom policy has already been crossed. The Department of Telecom Services has been corporatized into Bharat Sanchar Nigam Limited. The fruits of these reforms are now clearly visible. Tariffs have plunged, areas for local calls have been expanded, and there has been a remarkable growth and improvement of internet services. The proposed Communication Convergence Bill
will respond to the emerging scenario of the coming together of telecom, broadcasting and IT technologies. Information technology has emerged as one of the fastest growing sectors in our economy. Our software exports, which were US $4 billion last year, are continuing to grow at an impressive annual rate of over 50%, giving us the confidence that the target of US $50 billion by 2008 is certainly achievable. Knowledge economy presents India with an epochal opportunity to remove poverty and create prosperity for all our citizens, provided we quickly harness our rich human capital by improving education at all levels. The government has drawn up a program to double the intake of students in IITs and other premier engineering institutions in 2002 and treble it in 2003. A scheme to allow establishment of world-class science and technology institutions through philanthropic initiative of the private sector and NRIs is under consideration. A national mission on technology education under the chairmanship of the Minister for Human Resource Development will soon be set up. All these efforts will hasten the pace of development of trained manpower for realizing our potential in IT, biotechnology and other high-tech areas. Direct-to-home services with suitable safeguards have been permitted so that benefits of the superior technology are available to our television viewers. Doordarshan's contribution to developmental broadcasting and its role in promoting national solidarity are well known. It has launched a Kashmir channel devoted to Jammu and Kashmir and a dedicated 24-hour satellite Northeast channel to strengthen the bonds of emotional and cultural integration between our brethren in the states and the rest of the country. Private FM radio services will soon be available in several cities. One channel in each of these cities have been exclusively assigned to promote distance education. Integral development of the transportation infrastructure with a well-coordinated multi-modal approach is a vital need of our economy. Work on the National Highway Development Project comprising the Golden Quadrilateral and the North-South, East-West corridors is proceeding at a fast pace. Considerable non-budgetary resources, including multilateral funding, are being mobilized for this ambitious project, which is estimated at rupees 54,000 crores. A number of policy changes have been effected by the center and the states to attract private and captive user sector investment for augmenting the capacities of our ports. A new major port at Ennore was dedicated to the nation early this month. Being the first corporate port in India, it will be a trendsetter for future port development in the country. Although Indian railways are a lifeline of the nation, they have suffered from long years of neglect. Their finances are in a critical state, rendering them unable to implement many long-pending development projects. They are also starved of resources to fund the much-needed program to improve rail safety, which is estimated to need rupees 15,000 crores. There is a great untapped potential for the railways to raise internal resources through non-traditional means. They have recently started many innovative initiatives with the private sector and the state governments to implement new lines, gauge conversion and doubling projects. An expert committee on railways has just completed a comprehensive study of the operations, organization, finances, investment, tariffs, and other policy issues. The government will review the recommendations of this committee
and initiate necessary actions expeditiously. The public sector has played a vital role in the development of our economy. However, the nature of this role cannot remain frozen to what it was conceived 50 years ago, a time when the technological landscape and the national and international economic environment were so very different. The private sector in India has come of age, contributing substantially to our nation-building process. Therefore, both the public sector and the private sector need to be viewed as mutually complementary parts of the national sector. The private sector must assume greater public responsibilities, just as the public sector needs to focus more on achieving results in a highly competitive market. While some public enterprises are making profits, quite a few have accumulated huge losses. With public finances under intense pressure, governments are just not able to sustain them much longer. Accordingly, the centre as well as state governments are compelled to embark on a program of disinvestment. The government's approach to PSUs has a threefold objective: revival of potentially viable enterprises, closing down of those PSUs that cannot be revived, and bringing down government equity in non-strategic PSUs in 26% or lower. Interests of workers will be fully protected through attractive VRS and other measures. This program has already achieved some initial successes. The government has decided to disinvest a substantial part of its equity to enterprises such as Indian Airlines, Air India, ITDC, IPCL, VSNL, CMC, BALCO, Hindustan Zinc, Maruti Udyog. Where necessary, strategic partners should be selected through transparent process. Reforms in the power sector are crucial for achieving the ambitious growth targets of the economy. To remove chronic shortages in most parts of the country and to make power affordable to all, we have set a target of installing an additional capacity of 1 lakh megawatts by 2012, along with associated transmission and distribution systems. This will require an investment of around rupees 800,000 crore. The electricity regulatory commissions, both at the centre and in the states, will have to play a pivotal role in rationalization of tariffs, restoration of the financial health of SCBs, and creation of confidence in private investors. I urge the state governments, all the political parties, as well as employees of power utilities and consumers to support the reforms in the power sector. The transition may be difficult initially, but will ultimately be rewarding for all. 3 nuclear power reactors were connected to the national grid during this year. Nuclear Power Corporation of India created a world record with only 14 days between criticality and synchronization of the 4th unit of the Rajasthan Atomic Power Station. The world is now looking at renewable energy as a viable and clean option to bridge the energy gap and to contain the problem of environmental degradation. Our goal to add 10,000 megawatts from renewables over the next 12 years, increasing their share in the additional capacity installed to 10%. India Hydrocarbon Vision 2025 report has been finalized to chart out a long-term policy for the petroleum and natural gas sector. The steep rise in crude oil prices in the last 18 months have increased our oil import bill to nearly rupees 80,000 crore this year. Therefore, the government is taking specific steps to further raise indigenous crude oil production. We have awarded 25 blocks for exploration during this year.
We expect to award another 25 by September. We have also acquired oil equity abroad by buying 20% in the Sakhalin-1 oil field in Russia. Efforts for similar acquisition of oil equity overseas are underway. We have discovered oil and gas in the deep sea of the Krishna-Godavari basin and in the shallow waters of Cambay region. India has this year achieved complete self-sufficiency in refining crude oil. I am happy to inform you that last year oil marketing companies have released about 12 million LPG connections against a target of 10 million. The waiting list for LPG connections has ended and they are now available across the counter. Large-scale efforts are being made to provide LPG connections to our rural population. The government is following a twin strategy to achieve growth in the coal sector. We will allow participation of the private sector in coal mining. We shall also strengthen Coal India by facilitating joint ventures. The issue of safety in coal mines has been once again sharply highlighted by the recent tragedy in Bagdigi near Dhanbad. The imperative safety is closely linked to the modernization of the coal sector with the introduction of the latest mining technology and management techniques. It brooks no delay. A comprehensive resurvey of all coal mines vulnerable to mishaps has been ordered. Textile is a traditional industry in which India enjoyed a global advantage for a long time. However, this edge has been blunted because this sector was not enabled to restructure itself to respond to the growing competition in the global market. To end this neglect and to achieve accelerated development of the sector, a new textile policy has been unveiled. It aims to promote state-of-the-art textile manufacturing capability in our country to meet domestic demand and to enhance textile apparel exports from the present level of $13 billion to $50 billion by 2010. In addition to the Textile Upgradation Fund scheme and the Technology Mission on Cotton, separate schemes like the Deen Dayal Hathkarga Protsahan Yojana has also been launched to cater to the needs of weavers, farmers and artisans. India enjoys a significant competitive advantage in chemicals and pharmaceuticals. To encourage R&D investment in this sector, it is proposed to raise the FDI limit through the automatic route from present 74% to 100%. A new drug policy is being finalized to enable India's pharmaceutical industry to become a world leader. India has a huge untapped potential in tourism, which is the fastest growing industry in the world. The government has strengthened, in coordination with the states, its efforts to improve the infrastructure and market both traditional and non-traditional destinations to domestic and international tourists. After years of sluggish growth, our exports have been rising rapidly. They grew by 20.4% in dollar terms between April and December against a target of 18% for the entire year. Foreign currency assets on February 2nd stood at a comfortable level of $38.5 billion. Our liberalization of the trade policy continues to focus on procedural simplification to improve competitiveness of the Indian economy. While removing most quantitative restrictions in April as per our WTO commitment, we will see the transition will not be painful to the Indian agriculture and industry, especially to the small-scale sector. The existing export promotion zones at Mumbai, Kandla, Surat and Kochi have been converted into special economic zones. New such zones will also be set up at 9 other places.
The small-scale sector contributes more than 38% of the industrial production and 35% of direct exports. We have put in place a comprehensive policy package for the small-scale and tiny sector, a scheme to restructure and modernize the Khadi and Village Industries Commission is also on the anvil. A common brand name known as Sarvodaya has been launched to effectively promote KVIC products in the domestic and international markets. In view of the daunting challenges that India faces in a highly competitive global market, there is growing recognition that amendments to some of our labor laws cannot be delayed anymore. These amendments are indeed pro-labor because they will facilitate greater employment opportunities in both organized and unorganized sectors. They will do so by removing the hurdles to faster economic development by giving businesses the opportunity to make investments both in new units as well as to expanding existing ones. For example, India can command a significant competitive advantage in the international market in the labor-intensive industries like garments, light engineering, toys, handicrafts, leather, and IT-enabled services. The government will encourage large-scale investment of such industries and create necessary infrastructure for their rapid growth. In implementing these much-needed labor reforms, the government pledges not to dilute its commitment to workers' welfare in any way. Programs for training and retraining of workers to adapt to new technologies will be expanded. Facilities for their entrepreneurial development and self-employment will be augmented. Many steps have already been taken to expand the coverage, liberalize benefits, and social security schemes for workers. For the benefit of the poor families and the unorganized working class in rural and urban areas, Shri Bima Yojana was launched in June 2000. The Ministry of Labour is working on a comprehensive social welfare scheme for agricultural workers to constitute the largest segment of the workforce in the country. We propose to cover all child labour endemic states with projects for rehabilitation through education and emphasis on girls. Education, especially education of girls, is the most rewarding investment we can make in India's future. An integrated national education program, Sarva Shiksha Abhiyan, has been launched for universalizing elementary education. For this, a national mission has been constituted with the Prime Minister as its chairman. It aims to provide 8 years of quality education to all children up to the age of 14 by 2010 by making local communities own and manage the program. It will especially progress on girls and disadvantaged groups through alternative modes of education. The government will step up efforts for vocationalization of education and enable the youth to start their own enterprises as well as new self-employment ventures. Faster economic progress of all weaker sections of society is fundamental commitment of my government. We are taking many steps to make the finance and development corporations of the scheduled castes, scheduled tribes, backward classes, Safai, Karamcharis, and minorities more effective. More facilities will be created to provide assistance for some generation ventures, for income generation ventures, self-employment activities, and enhancement of skills and talents. The coverage of Microsoft to self-help groups, especially those managed by women, is being expanded by the economic advancement of the poor in rural and urban areas. The government is determined to check atrocities against the scheduled castes and scheduled tribes. The wealth of a nation lies chiefly in the health of its citizens. A new health policy will soon be unveiled, which will draw upon the positive as well as
negative lessons of the past efforts to achieve the unmet goal of health for all. One of these useful lessons has been the highly successful pulse polio immunization campaign which ended last month. The government will soon launch similar national campaigns with the widest possible mobilization of official and non-governmental resources to deal with other major challenges in public health such as malaria, Kala Azar, and the epidemic spread of HIV/AIDS. We have made considerable progress in eliminating leprosy. The coverage under the revised directly observed treatment short course strategy for tuberculosis has risen to 300 million from 20 million 2 years ago. It has saved nearly 70,000 lives since its inception. I commend the government for its bold step to initiate a legislation to ban all forms of tobacco advertising and sponsorship, along with all measures to prevent minors from getting addicted to nicotine. We have set in motion medical research based on human genome to make India a front runner in this highly promising new area of modern science. Ayurveda, homeopathy, Siddha, Unani, yoga, and naturopathy offer a wide range of preventive, promotive, and creative treatment that are both cost-effective and efficacious. We are working to end the long neglect of these holistic systems in our national healthcare strategy. A national medicinal plant board has been set up to promote cultivation, processing, production, and standardization of herbal products both for domestic and export markets. Steps are also being taken to protect our traditional knowledge in this area, which promises to attract immense global attention in the coming years. Deteriorating quality of life in our urban areas is a matter of deep concern. We need to promote environmentally sustainable, economically efficient, socially equitable, culturally vibrant, and regionally balanced urban development. The government will foster such policies with cooperation of state and local governments. The program to facilitate construction of 20 lakh additional housing units each year in urban and rural areas with the assistance of HUDCO is progressing satisfactorily. The Swarna Jayanti Shahri Rozgar Yojana and the National Slum Development Program are expected to significantly contribute to the alleviation of urban poverty by provision of shelter to the poor. Recurring droughts, floods, falling groundwater table, and shortages of drinking water in rural and urban areas have forcefully reminded us that we will face graver crises in the future unless we begin prudent management of our water resources today. Since the adoption of the National Water Policy in 1987, many problems have emerged in the development and management of our water resources. Therefore, a revised draft water policy was framed, which was discussed in the 4th meeting of the National Water Resources Council in July last year. To sort out the differences that emerge, a working group of ministers has been constituted. The government will soon launch a national campaign for water conservation with the active participation of various user groups. I am happy to inform you that the Forest Survey of India report 1999 has indicated that our forest cover increased by 3,890 square kilometers since the previous assessment in 1997. India continues to make rapid strides in space science. The first test of an indigenously developed cryogenic engine last year was an important milestone in the development of a geostationary satellite launch capability. Our latest satellite, INSAT-3B, will be the Swarna Jayanti Vidya Vikas
Antariksh Upagraha Yojana, aimed at providing developmental education in rural areas. 2 Jai Vigyan National Service and Technology missions were launched, one on conservation of agro-biodiversity and the other on household food and nutrition security. The Department of Justice is in the process of reviewing various procedural substantive laws to reduce delays in litigation. 2 specific schemes have been initiated for this purpose. The first involves setting up 1,734 fast-track courts for expediting the disposal of long-pending cases. The second is a pilot project for computerization and networking of courts in 4 metros. This will serve as a model for district and subordinate courts. The government is taking significant steps to reinvigorate the creative spirit of India's culture by building bridges between the present and the past. We have launched an innovative educative initiative to facilitate the equal partnership of the public and private institutions to manage our rich and diverse cultural heritage through the National Culture Fund. We have also stepped up our efforts to promote cultural and sporting ties with other countries. India will host the first ever Afro-Asian Games in November. India's foreign policy, resting on a strong foundation of continuity and national consensus, has responded creatively to the changing global scenario. The international community is beginning to recognize that a resurgent India, peace-loving, prosperous and strong, is a reliable factor for peace, stability and balance in Asia and in the world. The principal thrust of our foreign policy is to promote an external network of peaceful and friendly relations, which would enable us to focus on our internal task of nation building. Central to this objective is our consistent pursuit of friendly relations with our neighbors. Indeed, our ties with all of them, barring Pakistan, have continued to grow both in substance and in scope. India and Nepal share an intimate relationship characterized by wide-ranging interaction in all spheres. Prime Minister G.P. Koirala visited India last year when our countries comprehensively reviewed our bilateral relations to further strengthen them. This process will continue in the future despite efforts by vested interests in recent times to hinder it. We have a strong interest in the progress of Bhutan and Maldives, and our relations of mutual respect and trust enhance this objective. India hopes that peace will soon return to the troubled land of Afghanistan so that its people could shape their own destiny free from external interference and religious extremism. Improvement of infrastructural links has also been a focus of bilateral cooperation with our neighbors. A third broad gauge rail link with Bangladesh has been restored, further promoting our close cooperation and people-to-people relations. The operationalization of India-Sri Lanka Free Trade Agreement is expected to significantly increase economic linkages between our two countries. We look forward to welcoming President Chandrika Bandaranaike Kumaratunga in Delhi later this week and to review with her the whole range of our excellent bilateral relations. The new road link with Myanmar, built with Indian assistance, would ease travel and facilitate trade between our two countries. My visit to China last year and the recent visit of Mr. Li Peng, Chairman of the Standing Committee of the National People's Congress, have further developed our bilateral relations. We are committed to friendly and good neighborly ties with China based on Panchsheel and mutual sensitivity to each other's concerns. India's Look East policy saw the Prime Minister make successful visits to Vietnam and Indonesia last month.
I paid a state visit to Singapore in November 2000. India's historical links with Indochina and Southeast Asia are deep and strong. There is immense scope for increasing economic and people-to-people relations with the countries of this region, which forms an extended neighborhood. In this endeavor, the establishment of the Mekong-Ganga Cooperation Initiative is an important milestone. During the landmark visit of Japan's Prime Minister, Mr. Yoshihiro Mori, in August last year, we agreed to build a global partnership in the 21st century. We are looking forward to the visit of the President of the Republic of Korea, Mr. Kim Dae-jung, to India later this year. We share deep-rooted historical bonds with Central Asian countries and attach great importance to further developing our relations with them. Our civilizational contacts with West Asia and the Gulf go back to several millennia, and we value our relations with all countries of this region. We have expressed our deep concern at the stalemate in the Middle East peace process, the excessive use of force and the recent violence. We believe that all states in the region, including Palestine and Israel, have a right to exist within secure and internationally recognized boundaries. Our time-tested friendship with Russia attained a high point during October visit of President Vladimir Putin, when we signed a declaration on strategic partnership charting out a detailed roadmap for stronger Indo-Russian ties in the new century. The steadily growing strength of India's interaction with the United States of America forms an important new dimension of our external relations. President Clinton's visit to India and the Prime Minister's visit to US last year laid a firm foundation for this new phase of our relationship. I compliment Indian IT professionals in Silicon Valley and indeed the entire Indo-American community for their shining successes. They have changed the American perception, in fact, the world perception of India. We continue to engage with the administration of President George W. Bush to foster a stronger and mutually beneficial bilateral relationship. The first ever Indo-European summit in Lisbon during the Prime Minister's visit to Portugal in June last year marked a qualitative higher end of the Republic of Korea, Mr. Kim Dae-jung, to India later this year. We share deep-rooted historical bonds with Central Asian countries and attach great importance to further developing our relations with them. Our civilizational contacts with West Asia and the Gulf go back to several millennia, and we value our relations with all countries of this region. We have expressed our deep concern at the stalemate in the Middle East peace process, the excessive use of force and the recent violence. We believe that all states in the region, including Palestine and Israel, have a right to exist within secure and internationally recognized boundaries. Our time-tested friendship with Russia attained a high point during October visit of President Vladimir Putin, when we signed a declaration on strategic partnership charting out a detailed roadmap for stronger Indo-Russian ties in the new century. The steadily growing strength of India's interaction with the United States of America forms an important new dimension of our external relations. President Clinton's visit to India and the Prime Minister's visit to US last year laid a firm foundation for this new phase of our relationship. I compliment Indian IT professionals in Silicon Valley and indeed the entire Indo-American community for their shining successes. They have changed the American perception, in fact, the world perception of India. We continue to engage with the administration of President George W. Bush to foster a stronger and mutually beneficial bilateral relationship. The first ever Indo-European summit in Lisbon during the Prime Minister's visit to Portugal in June last year
marked a qualitative higher level in India's strategic partnership with the European Union. It formulated an agenda to intensify our economic and commercial exchanges. We are confident that our warm relations with the UK, France, Germany, Italy, and other European countries will continue to acquire new dimensions. India is further consolidating her historical links with the countries of the Eastern and Central Europe. High-level exchanges are planned with many of them. Our relations with the African countries are marked by a warm friendship and a shared concern for the interests of the developing world. The Indian Ocean Rim offers great potential for closer cooperation with Southern and Eastern Europe. The recent visit to India of the Prime Minister Sir Anirudh Jagannath underscored our intimate relationship with Mauritius. I am looking forward to visiting Mauritius on the occasion of their National Day celebrations. The President of Algeria, Mr. Abdelaziz Bouteflika, was the chief guest at this year's Republic Day parade. The visit of the President of Nigeria, Mr. Olusegun Obasanjo, has further consolidated our ties with this important African country. We are looking forward to the visit of His Majesty King Mohammed VI of Morocco later this month. We will continue to strive for our relations with the countries of Latin America and to expand our traditionally warm ties with the Caribbean countries and other members of the Commonwealth. The suppression of democracy in the multi-ethnic society of Fiji continues to cause us grave concern. India will work closely with the international community for the peaceful restoration of a non-discriminatory democratic order in Fiji. The international community agreed at the UN Millennium Summit that globalization process should be inclusive and equitable. It condemned international terrorism, including cross-border terrorism, traffic in illegal arms, illicit arms, and drugs, and religious fanaticism and military adventurism. India's call for an early international conference against terrorism was endorsed. An increasing number of countries have joined the demand for making the United Nations Security Council to be more representative and responsive. India's candidature for the permanent membership of the expanded Security Council is also finding increasing support. We reiterate our call for global, comprehensive and non-discriminatory nuclear disarmament. At the same time, our security imperatives compel us to maintain a credible minimum nuclear deterrent until this objective is achieved. My government has taken major initiatives to strengthen our multifaceted bonds with the Indian diaspora. They are 20 million strong, spread all over the world, and have maintained close cultural, economic, and spiritual ties with their motherland, even while integrating harmoniously into their host societies. A high-level committee has been appointed to make policy recommendations to encourage their participation in India's socio-economic transformation. Honourable members, you begin the budget session today. Apart from the financial business relating to the railway and general budgets, there is a heavy legislative agenda awaiting completion in this session. 2 ordinances also need to be replaced with bills. All this work is intrinsically linked to our country's all-round and rapid socio-economic development. The people who have elected you have a high expectation that the precious time of Parliament is best used for the completion of the scheduled businesses. I wish you success in your endeavors. Jai Hind.
माननीय सदस्यगण, वर्ष 2001 में संसद के इस प्रथम सत्र में आपका स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मैं इस सत्र में प्रस्तुत किए जाने वाले बजट और विधायी कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। संसद का ये सत्र गत माह गुजरात में आए भूकंप के कारण हुए विनाश की भयंकर छाया में हो रहा है। इसमें हजारों जानें गईं, हजारों करोड़ रुपए की सरकारी और निजी संपत्ति नष्ट हुई और बहुत से लोग बेघर हो गए। हम आज शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करते हैं। हम उन्हें और भूकंप से प्रभावित अन्य सभी को विश्वास दिलाते हैं कि संकट और वेदना की इस घड़ी में वे अकेले नहीं हैं। संपूर्ण राष्ट्र उनके साथ है और उसने पूरी सहानुभूति और दृढ़ता का परिचय दिया है। इस दुखद घटना से विश्व की अनेक सरकारों, गैर सरकारी संगठनों और बहुपक्षीय एजेंसियों ने खुले दिल से इस राष्ट्रीय प्रयास में योगदान दिया है। मेरी सरकार और भारत की जनता उन सभी की अत्यधिक आभारी है। केंद्र सरकार और गुजरात राज्य सरकार राज्य भर में राहत और पुनर्वास संबंधी कार्यों को मिलकर कर रही है। मैं थल सेना, वायुसेना और नौसेना के जवानों और अफसरों की इस प्रयास में उनकी उल्लेखनीय भूमिका के लिए प्रशंसा करता हूं। अन्य सभी राज्यों की सरकारें भी गुजरात की सहायता में बढ़कर आगे आई हैं। अवश्य ही ये सभी केंद्रीय एवं राज्य एजेंसियों के समन्वित प्रयास का फल है कि विद्युत, दूरसंचार, रेल, हवाई व सड़क संपर्कों की उल्लेखनीय गति से बहाली हुई। बड़े पैमाने पर स्वयंसेवी संस्थाओं के सराहनीय योगदान ने इन प्रयासों में बहुत सहायता की है, उन्हें सुदृढ़ बनाया है। जीवित बचे लोगों की सहायता करने के लिए हजारों स्वयंसेवक दिन रात काम कर रहे हैं। मैं इस सम्मान्य सदन की ओर से उनके समर्पित और अथक कार्यों के लिए उनकी सराहना करता हूं। बाह्य अथवा आंतरिक संकट की घड़ी में हमारे देशवासियों ने सदैव अपूर्व एकता और सेवा भावना से कार्य किया है। हमें इन परोपकारी गुणों को और विकसित करना चाहिए ताकि ये हर समय हमारे राष्ट्रीय जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित कर सकें। गुजरात में आई विपत्ति, 1999 में उड़ीसा के आए महाचक्रवात और हाल के वर्षों में देश के अन्य भागों में आई प्राकृतिक आपदाओं ने हमारी आपदा प्रबंधन क्षमताओं का विस्तार करने और उन्हें आधुनिक बनाने की तात्कालिक आवश्यकता को एक बार फिर उजागर किया है। हमें निर्माण तथा नगर नियोजन नियमों में तत्काल संशोधन करने होंगे तथा उन्हें अद्यतन बनाना होगा। हमें उन्हें दृढ़ता से लागू करने और ये सुनिश्चित करने को भी आवश्यकता है कि उनकी अवहेलना करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। इसके अतिरिक्त ये आवश्यक है कि हमारे पास केंद्र, राज्य तथा जिलों में एक व्यापक आपदा प्रबंधन योजना हो जिसके विशिष्ट दीर्घावधिक तथा अल्पावधिक उद्देश्य हों। हमें सामूहिक रूप से प्रयास करके यह सुनिश्चित करना होगा कि आपदा के बाद का जीवन उससे पहले के जीवन से बेहतर हो। मुझे खुशी है कि सरकार ने गुजरात भूकंप पर विचार करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में आम सहमति होने पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति गठित की गई है। इसमें अन्य के साथ राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों के प्रतिनिधि शामिल हैं। यह गुजरात में राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण संबंधी कार्यों के लिए अल्प, मध्य और दीर्घकालिक उपायों का सुझाव देगा। यह गुजरात में राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा करेगी। ये भविष्य में राष्ट्रीय आपदाओं से निपटने के लिए एक प्रभावी और दीर्घकालीन नीति के लिए आवश्यक संस्थागत और विधायी उपायों पर भी विचार करेगी। इसके अतिरिक्त ये राष्ट्रीय आपदा को परिभाषित करने वाले मापदंडों पर भी विचार करेगी। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार एक स्थायी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्यों में उपयुक्त सांविधिक प्राधिकरणों की स्थापना करने पर विचार करेगी। भारत के संपूर्ण इतिहास में तीर्थों ने लोगों को धार्मिक निष्ठा और राष्ट्रीय एकता के बंधनों में बंध कर एकजुट रखने में अद्वितीय भूमिका भी निभाई है। इलाहाबाद में आयोजित महाकुंभ में एकत्रित अपार जनसमूह में आस्था के भव्य प्रदर्शन को पुनः यह बात सिद्ध करती है। मैं इस महापर्व की सुचारू व्यवस्था करने पर उत्तर प्रदेश सरकार, रेलवे और सभी अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी एजेंसियों को उनके समन्वित प्रयासों के लिए बधाई देता हूँ, जिन्होंने संपूर्ण विश्व पर अपनी छाप छोड़ी है। ये वर्ष हमारे गणतंत्र की स्वर्ण जयंती समारोह का समापन वर्ष है। जैसे जैसे साल बीतते जाएंगे, 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950
इतिहास के पन्नों में और पीछे होते चले जाएंगे। ये अतीत की बात लग सकती है। ख़ास तौर पर भारत के युवकों को, जो हमारी जनसंख्या का लगभग 37% हैं, फिर भी समय हमारे देश के बृहद इतिहास में इन 2 तारीखी दिनों के महत्व को कम नहीं कर सकता। स्वतंत्रता और लोकतंत्र की पवित्र ज्योति नई शताब्दी और सहस्राब्दी में भारत की यात्रा को प्रदीप करती रहेगी। इस संसद को, जो कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का चुना हुआ सर्वोच्च निकाय है, हमारे संविधान में प्रतिष्ठापित गणतांत्रिक मूल्यों को प्रोत्साहित करने के लिए अधिक से अधिक योगदान करने का संकल्प करना चाहिए। यद्यपि हम सभी को स्वतंत्रता के बाद हुई भारत की उपलब्धियों पर गर्व है, फिर भी हम उन गंभीर चुनौतियों के बारे में भी समान रूप से जागरूक हैं जिनका हम अभी भी सामना कर रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सचेतन शब्दों में हमें आगे बढ़ने में मार्गदर्शन लेना चाहिए। उन्होंने संविधान का प्रारूप प्रस्तुत करते समय बड़े विश्वास से कहा था, 26 जनवरी 1950 को हम अंतर्विरोधों के जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। राजनीति में समानता होगी और सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में असमानता। हमें शीघ्र इस अंतर्विरोध को दूर करना होगा। दुर्भाग्य से जिस अंतर्विरोध के बारे में डॉक्टर अम्बेडकर और स्वतंत्रता आंदोलन के बहुत से अन्य समर्थकों ने हमें आगाह किया था, वह आज भी हमारे राष्ट्रीय जीवन की क्षति पहुंचा रहा है। इसलिए हम सभी को अपनी स्वतंत्रता और लोकतंत्र को तब तक अधूरा मानना चाहिए जब तक कि हम इस अंतर्विरोध को समाप्त न कर दें और अपने महान राष्ट्र का निर्माण ऐसी मातृभूमि के रूप में करें जिसमें उसके 100 करोड़ से भी अधिक नागरिकों को न्याय और समान अवसर मिलें। भारत में लोकतंत्र की मुख्य उपलब्धियों में से एक ये है कि राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी न केवल मतदाता के रूप में बल्कि चुने हुए प्रतिनिधियों और कार्यकारी उत्तरदायित्व के धारकों के रूप में भी लगातार बढ़ रही है। साथ ही इस सकारात्मक अनुभव ने महिलाओं और पुरुषों दोनों को संसद और राज्य विधानसभाओं में हमारी बहनों के अल्प प्रतिनिधित्व के बारे में जागरूक किया है। संविधान 85वां संशोधन विधेयक 1999 जो महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के इस व्यापक समर्थन के परिप्रेक्ष्य में था, संसद में पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह विधेयक अभी तक अधिनियम नहीं बना है। मैं सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूँ कि वे इस विधेयक पर सहमति बनाएं, उसे इस सत्र में पारित करें। हम ये वर्ष महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मना रहे हैं। भारतीय संसद द्वारा ऐसा करना उसके लिए समाचीन भेंट होगी। भारत ने पिछले पखवाड़े में अपना सबसे बड़ा जनगणना अभियान आरंभ किया है। हमारी जनसंख्या अब 100 करोड़ को पार कर गई है। पिछले वर्ष हमने एक व्यापक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति भी अंगीकार की है। यह नीति 3 प्रमुख उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनाई गई है। ये हैं जनसंख्या वृद्धि की दर को कम करना, आकार को स्थिर बनाना और सारी जनसंख्या विशेष रूप से महिलाओं के लिए कल्याण और विकास के अवसर प्रदान करना। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राज्यों के सहयोग से कुछ प्रोत्साहन और हतोत्साहन का कार्यक्रम तैयार करने की आवश्यकता है। इन्हें सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संस्थाओं के पूर्ण सहयोग के बिना जोर जबरदस्ती लागू किया जाना चाहिए। भारत की बाह्य और आंतरिक सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम किसी भी संभावित घटना का मुकाबला करने के लिए देश की स्ट्रेटेजिक रिस्पांस कैपेबिलिटी को सुदृढ़ बनाने के लिए वचनबद्ध हैं। मंत्रियों के एक दल ने राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली पर कारगिल समीक्षा समिति की सिफारिशों की जांच की है और यह शीघ्र ही अपने सुझाव प्रस्तुत करेगा। अपने देश में बनाए गए हल्के लड़ाकू विमान ने गत माह सफलतापूर्वक अपनी पहली उड़ान भरी। इस राष्ट्र वैमानिक उपलब्धि और प्रशिक्षण पात्र विकास में अभूतपूर्व उपलब्धियों के लिए भी अपने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के समर्पित कार्य की प्रशंसा करता है। सरकार जम्मू कश्मीर में शांति और सामान्य स्थिति लाने के लिए एक बहुकोणीय नीति अपना रही है। इसके एक भाग के रूप में इसने 19 नवंबर 2000 को रमज़ान के पवित्र महीने के दौरान राज्य में संघर्ष की पहल न करने की एक तरफा घोषणा करके एक प्रमुख शांति मिशन आरंभ किया। इस साहसिक पहल की अवधि 2 बार बढ़ाकर 26 फरवरी 2001 तक रखी गई है, जैसी कि प्रत्याशा थी, जिसका जम्मू कश्मीर के लोगों ने भरपूर स्वागत किया, जो अपने इस सुंदर राज्य में उग्रवाद और हिंसा की समाप्ति के लिए उत्सुक हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी पूरा समर्थन दिया है।
क्योंकि वह इसे कश्मीर मामले के शांतिपूर्वक और स्थायी समाधान के लिए भारत की सच्ची वचनबद्धता के एक और प्रमाण के रूप में देखता है। हम सभी के लिए यह अत्यंत दुख और चिंता का विषय है कि पाकिस्तान ने भारत के सद्भाव के अनुरूप प्रतिक्रिया नहीं की है। पाकिस्तान की धरती से होने वाले सीमा पार के आतंकवाद तथा द्वेषपूर्ण भारत विरोधी प्रचार में समाप्ति को तो दूर कोई कमी भी नहीं की है। इन लोगों द्वारा जहाद की ओट में बर्बरतापूर्ण कृत्यों के कारण रोजाना बहुत से बेकसूर लोग मर रहे हैं। मानवता के विरुद्ध किए जा रहे ये कृत्य धर्म का उपहास हैं और इसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। भारत के साथ बातचीत शुरू करने की उनकी उत्सुकता संबंधी उसके प्रकथन तथा तब तक अविश्वसनीय नहीं होंगे जब तक कि वह आतंकवादियों द्वारा गोलीबारी कराता रहेगा। यदि पाकिस्तान सार्थक बातचीत के लिए अनुकूल वातावरण बनाए तो भारत वार्ता प्रक्रिया पुनः शुरू करने के लिए तत्पर है। हमारी सेना और अर्धसैनिक बल कष्टप्रद परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं। राष्ट्र उनकी अटल दृढ़ता एवं बलिदान की कद्र करता है। आतंकवादी संगठनों के विरुद्ध कार्रवाई अनवरत चलती रहेगी। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अधिकाधिक भाड़े के विदेशी गुटों तक सीमित होकर रह गया है। इससे राज्य में लोकतांत्रिक कार्यकलाप की गुंजाइश बढ़ गई है। हाल में हुए पंचायत चुनावों में राज्य के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मैं फिर से ये दोहराता हूँ कि सरकार राज्य में हिंसा का त्याग करने वाले किसी भी समूह से वार्ता के लिए तैयार है। पूर्वोत्तर की स्थिति में पहले की अपेक्षा सुधार हुआ है। सामरिक महत्व के इस क्षेत्र में शांति और सामान्य स्थिति के लिए राजनीतिक स्थिरता और तीव्र सामाजिक आर्थिक विकास जरूरी है। इसे उग्रवादी तथा आतंकवादी संगठनों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के साथ जोड़ना होगा। पूर्वोत्तर के लिए तैयार किए गए विकास संबंधी विशेष पैकेज को तीव्रता से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस क्षेत्र को प्रत्येक वर्ष पर्याप्त विकास संबंधी संसाधन दिए जाते हैं, परंतु बुनियादी तौर पर उनका प्रभाव उस अनुपात में नहीं है। मैं राज्य सरकारों से यह अनुरोध करता हूं कि वे ये सुनिश्चित करें कि सरकारी निधियों का कोई कुप्रबंध या दुरुपयोग न हो। इसके लिए वे प्रभावी विकेंद्रीकरण करें, लोकतांत्रिक संस्थाओं को सुदृढ़ बनाएं और लोक संगठनों की भागीदारी बढ़ाएं। उन्हें अपने संबंधित राज्य में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा भी अवश्य करनी चाहिए। सरकार पंथ निरपेक्षता के प्रति अपनी वचनबद्धता पर कायम है। सांप्रदायिक तथा जाति हिंसा लगातार घट रही है। भारत में सांप्रदायिक गड़बड़ी को फैलाने के लिए सीमा पार से की जा रही लगातार कोशिशों में मद्देनज़र यह सुधार विशेष रूप से उल्लेखनीय है। हमने सांप्रदायिक एवं उग्रवादी संगठनों के विरुद्ध अपनी चौकसी बढ़ा दी है। गड़बड़ी करने वालों के विरुद्ध कठोर और निष्पक्षतापूर्व कार्रवाई करने के संबंध में कानून अपना कार्य करेगा। पिछले वर्ष हुई अति महत्वपूर्ण घटनाओं में एक थी 3 नए राज्यों छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड का सृजन किया जाना। इस प्रकार भारत संघ में राज्यों की संख्या 25 से 28 हो गई। इन नए राज्यों के बनने से वहाँ के लोगों की लंबे समय से चली आ रही आकांक्षाएं पूरी हो गई हैं। इससे उनके सामाजिक आर्थिक विकास में तेजी आ जाएगी। मैं आप सभी के साथ इन नए राज्यों को हार्दिक बधाई देता हूँ। केंद्र तथा राज्यों के संबंध सौहार्दपूर्ण बने हुए हैं। अंतर्राज्यीय परिषद तथा उसकी स्थायी समिति की नियमित रूप से बैठकें हो रही हैं। ये हमारे लोकतंत्र तथा हमारी संघीय राज्य व्यवस्था के लिए शुभ संकेत है। अगस्त में आंतरिक सुरक्षा पर मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ, जिसमें उग्रवाद, आतंकवाद तथा संगठित अपराध से निपटने के लिए राज्यों के बीच तथा केंद्र व राज्यों के बीच और बेहतर समझबूझ तथा अधिक समन्वय विकसित करने में मदद मिली है। राज्य द्वारा किए जाने वाले समान अंशदान के आधार पर राज्य पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए दी जाने वाली केंद्रीय सहायता अगले 10 वर्षों के लिए 200 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष कर दी गई है। 11वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिसमें राज्य सरकारों की बिगड़ती राजकोषीय दशा के गंभीर मुद्दे का उल्लेख किया गया है। राज्यों के राजकोषीय घाटे को कम करने तथा चरणबद्ध ढंग से वित्तीय सुधार लाने के लिए मॉनिटर किए जाने योग्य एक सुधार कार्यक्रम इसकी सिफारिशों में से एक है। केंद्र में यही सकारात्मक उद्देश्य प्राप्त किए जाने हेतु राजकोषीय उत्तरदायित्व विधेयक तैयार किया गया है। भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया को
अब एक दशक हो गया है। इस अवधि के दौरान केंद्र तथा राज्यों में विभिन्न दलों और गठबंधन वाली कई सरकारों ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। इस प्रकार सुधारों की कार्यसूची को बढ़ाती राष्ट्रीय सहमति बनाए रखा गया है। इस सर्वसम्मति को व्यापक और सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता है। ये हमेशा इस मापदंड से नियंत्रित होना चाहिए कि क्या अमुक नीतिगत परिवर्तन देश तथा आम आदमी के हितों को बढ़ावा देते हैं। सुधार प्रक्रिया को इस प्रकार व्यापक बनाए जाने की आवश्यकता है कि आत्मनिर्भरता को पुष्ट किया जा सके, रोजगार के अधिक अवसर सृजित किए जा सकें, गरीबी को तेजी से दूर किया जा सके। पिछले दशक के अनुभव ने यह स्पष्ट रूप से दिखा दिया है कि आर्थिक सुधार तभी वांछित परिणाम दे सकते हैं जब प्रशासनिक, न्यायिक, शैक्षिक और श्रम सुधार उनके अनुपूरक हों। ये सभी सुधार एक राष्ट्रीय प्रयास का अभिन्न अंग हैं, जिसका लक्ष्य भारत की प्रचुर क्षमता को 21वीं सदी में नवीकरण वास्तविकता में बदलना है। भारत विश्व की 10 तीव्रतम विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। पिछले 3 वर्षों के दौरान हमारी अर्थव्यवस्था में 6 से 7% तक की वार्षिक दर से उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ऐसा देश के विभिन्न हिस्सों में सूखा, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ बाह्य मोर्चे पर गंभीर चुनौतियों के बावजूद हुआ है। तथापि हमें अपनी प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करने और गरीबी को आधा करने के लिए अगले 10 वर्षों के हेतु 9% की वार्षिक वृद्धि का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता है। यदि सरकारें, राजनीतिक दल तथा जनता तीव्र एवं अधिक संतुलित विकास को दशक के सामूहिक मंत्र के रूप में अंगीकार कर ले, तो आज की समस्याओं को भविष्य में एक महोत्कर्ष की प्राप्ति के लिए अवसरों के रूप में बदला जा सकता है। कृषि हमारे अधिकतर लोगों की जीविका का साधन बनी हुई है। पिछले वर्ष खाद्यान्नों की 209 मिलियन टन की रिकॉर्ड उपज के लिए हमारे परिश्रमी किसान शाबाशी के हकदार हैं। हमारा बफर स्टॉक 40 मिलियन टन से अधिक हो गया है और अब तक का सर्वाधिक है। आज भारत संसार में अधिकतम दूध उत्पन्न करने वाला प्रथम देश तथा अधिकतम चावल, गेहूं, फल और सब्जियां पैदा करने वाला दूसरा देश बन गया है। हम संसार में अंडों के 5वें तथा मछलियों के 6ठे सबसे बड़े उत्पादक हैं। कृषि का त्वरित और सतत विकास करना सरकार की उच्च प्राथमिकता है। पिछले वर्ष प्रथम राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की गई थी। उसमें 4% से अधिक की वार्षिक वृद्धि दर रखी गई है, जो हमारी मृदा, जल तथा जैव विविधता के संसाधनों के प्रभावी दोहन पर आधारित है। इसका उद्देश्य कृषि, सिंचाई, कृषि प्रसंस्करण, वितरण तथा विपणन में अधिक सार्वजनिक और निजी निवेशों को बढ़ावा देना भी है। ऑर्गेनिक फार्मिंग और जैव उर्वरकों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा। पिछले वर्ष घोषित की गई राष्ट्रीय भंडारण नीति के खाद्यान्नों की थोक में समेकित उठाई, धराई, भंडारण एवं ढुलाई के लिए अत्याधिक भंडार गृहों के निर्माण में निजी निवेश को सुलभ बनाया जाएगा। अपने किसानों को गैर वाजिब विश्व प्रतियोगिता से बचाने के लिए खाद्य तेलों सहित कई कृषि वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिए गए हैं। सरकार ने लेवी चीनी का अनुपात 40% से घटाकर 15% करके चीनी पर से चरणबद्ध रूप से नियंत्रण हटाना शुरू कर दिया है। पिछले वर्ष के खरीफ मौसम के दौरान 65 लाख किसानों का राष्ट्रीय फसल बीमा योजना के अधीन बीमा किया गया है। अब तक 105 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए जा चुके हैं। सिंचाई, विद्युत और ग्रामीण आधारभूत ढांचे में नई पूंजीगत परिसंपत्तियां बनाने के बजाय इनपुट्स पर सब्सिडी देकर अधिक कृषि उत्पादन पर जोर देने की नीति ने कृषि में सार्वजनिक निवेश को काफ़ी कम कर दिया है। इसने दुर्लभ संसाधनों के अकुशल इस्तेमाल को प्रेरित करने के अतिरिक्त भूमि, जल संसाधनों, नहरों तथा सड़कों को खराब कर दिया है। इससे फसल उत्पादक तथा किसानों के लाभ अवरुद्ध हुए हैं। इस दुष्चक्र को अधिक कार्यक्षमता और उत्पादकता के सुचक्र में बदलने की आवश्यकता है, ताकि किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को, खासकर उनमें से निर्धनतम को फायदा हो सके। तीव्र ग्रामीण विकास में सबसे बड़ी रुकावट बहुत कम गांवों का सड़कों से जुड़ा होना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य अगले 7 वर्षों में 500 से अधिक की जनसंख्या वाली 1 लाख से ज़्यादा की ऐसी ग्रामीण बस्तियों को जो सड़कों से नहीं जुड़ी हैं 12 सड़कें उपलब्ध कराना है। केंद्र ने पहली बार ग्रामीण सड़कों के सुधार के लिए 2500 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का प्रावधान किया है।
यह केंद्र प्रायोजित योजना राज्य सरकारों तथा पंचायती राज निकायों की पूर्ण भागीदारी से कारगर ढंग से कार्यान्वित की जाएगी। विभिन्न मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले सभी जल विभाजक और क्षेत्र विकास कार्यक्रमों को एक ही छत के नीचे लाने के लिए कदम उठाए गए हैं। यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल स्कीमों पर अभी तक पर्याप्त संसाधन लगाए गए हैं, लेकिन स्वामित्व की स्पष्ट व्याख्या के अभाव, घटिया आयोजन तथा रखरखाव के कारण इन योजनाओं के ठोस तथा अपेक्षित लाभ नहीं मिले हैं। अतः ग्रामीण पेयजल पूर्ति स्कीमों के कार्यान्वयन, प्रबंधन तथा संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी को संस्थागत करने के लिए प्रारंभ में अनेक जिलों में प्रायोगिक आधार पर नए प्रयास किए गए हैं। सरकार ने खाद्य सब्सिडियों के लक्ष्य को बेहतर ढंग से प्राप्त करने के संबंध में सर्वसम्मति को देखते हुए गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के लिए खाद्यान्नों का मासिक आवंटन आधी आर्थिक लागत पर 10 किलो से बढ़ाकर 20 किलो कर दिया है। दिसंबर में शुरू की गई अंत्योदय अन्न योजना हमारे आर्थिक सुधारों के मानवीय पक्ष को दर्शाती है। यह देश के 1 करोड़ निर्धनतम परिवारों को और भी कम दरों पर हर महीने 25 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी तथा ये दर गेहूं के लिए 2 रुपये प्रति किलो और चावल के लिए 3 रुपये प्रति किलो होगी। सरकारी नीतियों के कारण अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य उचित रहे हैं। देश के किसी भी भाग से किसी भी वस्तु की कमी की सूचना नहीं मिली है। तीव्रतर एवं अधिक संतुलित आर्थिक विकास के लिए भारत की भौतिक अवसंरचना को आधुनिक बनाने और उसका विस्तार करने की तत्काल आवश्यकता है। हमने हाल के वर्षों में कुछ क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन कई अन्य क्षेत्रों में गंभीर अड़चनें भी बनी हुई हैं। मुझे आपको ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सरकार ने दूरसंचार के क्षेत्र में सुधारों को दृढ़ता से आगे बढ़ाया है। नई दूरसंचार नीति में निर्दिष्ट कई महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित समय से पहले ही हासिल किए जा चुके हैं। दूरसंचार सेवा विभाग को भारत संचार निगम लिमिटेड के रूप में निगमित कर दिया गया है। इन सुधारों के परिणाम अब साफ दिखाई देने लगे हैं। टैरिफ में तेज़ी से कमी हुई है, स्थानीय कालों के दायरे का विस्तार हुआ है और इंटरनेट सेवाओं में उल्लेखनीय प्रगति और सुधार हुआ है। प्रस्तावित संचार अभिसरण विधेयक दूरसंचार, प्रसारण और सूचना प्रौद्योगिकी के एकीकरण के उभरते परिदृश्य के अनुसार होगा। सूचना प्रौद्योगिकी हमारी अर्थव्यवस्था में तीव्रतम गति से विकसित हो रहे एक क्षेत्र के रूप में उभर कर सामने आई है। हमारे सॉफ्टवेयर निर्यात 50% से अधिक की वार्षिक दर से लगातार बढ़ रहे हैं। यह दर प्रशंसनीय है। यह निर्यात पिछले वर्ष 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हुआ था। यह हमें विश्वास दिला रहा है कि सन 2008 तक 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य यकीनन प्राप्त हो जाएगा। द नॉलेज इकोनॉमी गरीबी दूर करने और हमारे सभी नागरिकों को समृद्ध बनाने हेतु भारत के समक्ष एक युग प्रवर्तक अवसर प्रस्तुत करता है, बशर्ते हम सभी स्तरों पर शिक्षा में सुधार करके अपने समृद्ध मानव संसाधन का तुरंत उपयोग कर सकें। सरकार ने 2002 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और अन्य अग्रणी अभियांत्रिकी संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या को दोगुना करने और 2003 में तिगुना करने का एक कार्यक्रम तैयार किया है। निजी क्षेत्र तथा अनिवासी भारतीयों के परोपकारार्थ प्रयासों का द्वारा विश्वस्तरीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना के लिए अनुमति देने संबंधी एक योजना विचाराधीन है। मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में प्रौद्योगिकी शिक्षा पर एक राष्ट्रीय मिशन शीघ्र ही स्थापित किया जाएगा। ये सभी प्रयास सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी और अन्य उच्च तकनीक वाले क्षेत्रों में अपनी पूरी क्षमता प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति के विकास की गति को तेज करेंगे। समुचित सुरक्षा उपायों के साथ डायरेक्ट टू होम सेवाओं को अनुमति दे दी गई है ताकि इस बेहतर प्रौद्योगिकी के लाभ हमारे टेलीविजन दर्शकों को मिल सके। विकास संबंधी प्रसारण में दूरदर्शन का योगदान तथा राष्ट्रीय अखंडता को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका सुविदित है। इसने विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के लिए कशीर चैनल तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 24 घंटे के प्रसारण वाला उपग्रह चैनल शुरू कर दिया है ताकि इन राज्यों तथा देश के अन्य हिस्सों में रह रहे हमारे भाई बंधुओं के बीच भावात्मक तथा सांस्कृतिक एकता के बंधन सुदृढ़ बन सकें। अनेक शहरों में प्राइवेट FM रेडियो सेवाएं शीघ्र ही उपलब्ध हो जाएंगी। इन प्रत्यक्ष
शहरों में एक चैनल को विशेष रूप से दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देने का कार्य सौंपा गया है। सुसमन्वित और बहुविधियों वाली परिवहन अवसंरचना का समग्र विकास हमारी अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। स्वर्णिम चतुर्मार्गीय तथा उत्तर दक्षिण पूर्व एवं पूर्व पश्चिम मार्ग वाली राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना पर प्रगति तीव्र गति से हो रही है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए बहुपक्षीय वित्त पोषण सहित पर्याप्त गैर बजटीय संसाधन जुटाए जा रहे हैं। इस पर 54,000 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। केंद्र व राज्यों द्वारा कई नीतिगत परिवर्तन लागू किए गए हैं, जिससे कि हमारे बंदरगाहों की क्षमता में बढ़ोतरी हेतु निजी एवं कैप्टिव प्रयोक्ता क्षेत्र का निवेश आकर्षित किया जा सके। इस माह के आरंभ में एन्नोर स्थित एक नया बड़ा बंदरगाह राष्ट्र को समर्पित किया गया है। भारत का पहला निगमित पत्तन होने के कारण यह भविष्य में देश में होने वाली बंदरगाह विकास के लिए पथ निर्धारक होगा। यद्यपि भारतीय रेल राष्ट्र की जीवन रेखा है, फिर भी यह वर्षों से उपेक्षित रही है। उसकी वित्त व्यवस्था शोचनीय दशा में है, जिससे वह काफ़ी समय से लंबित कई विकास परियोजनाओं को कार्यान्वित नहीं कर पाई है। रेल सुरक्षा के सुधार के अत्यावश्यक कार्यक्रम का वित्त पोषण करने के लिए भी उसके पास संसाधनों की भारी कमी है। इस कार्य के लिए अनुगामित 15,000 करोड़ रुपए चाहिए। अपरांपिक तरीकों तथा आंतरिक संसाधन जुटाने की एक बड़ी और अभी तक अप्रयुक्त क्षमता रेलवे के पास है। इसने हाल ही में नई लाइनें बिछाने, आमान परिवर्तन और डबलिंग परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए निजी क्षेत्र और राज्य सरकारों के साथ कई अभिनव कार्यक्रम शुरू किए हैं। रेलवे संबंधी एक विशेषज्ञ समिति ने प्रचालनों, संगठन, वित्त पोषण, निवेश, टैरिफ और अन्य नीतिगत मुद्दों का एक व्यापक अध्ययन हाल ही में पूरा किया है। सरकार इस समिति की सिफारिशों की समीक्षा करेगी और शीघ्र ही यथोचित कार्रवाई करेगी। सार्वजनिक क्षेत्र ने हमारी अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, परंतु इस भूमिका का स्वरूप उसी स्थिति में स्थिर नहीं रह सकता जिसकी परिकल्पना 50 वर्ष पहले की गई थी। ये ऐसा समय था जब प्रौद्योगिकी परिदृश्य तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक वातावरण बहुत भिन्न थे। भारत में निजी क्षेत्र ने समय के साथ उन्नति की है तथा वह हमारे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में पर्याप्त रूप से योगदान दे रहा है। अतः सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र दोनों को राष्ट्रीय क्षेत्र के परस्पर अनुपूरक घटकों के रूप में देखे जाने की आवश्यकता है। निजी क्षेत्र को उसी प्रकार और अधिक सार्वजनिक जिम्मेदारियां वहन करनी चाहिए जिस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र को अधिक प्रतियोगिता बाजार में परिणाम प्राप्त करने पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उद्यम तो लाभ कमा रहे हैं, जबकि कुछ को भारी संचित हानि हुई है। सार्वजनिक वित्त पोषण व्यवस्था पर भारी दबाव के कारण सरकारें उन्हें लंबे समय तक बनाए रखने में बिल्कुल ही समर्थ नहीं हैं। तदनुसार केंद्र और कई राज्य सरकारों को विनिवेश कार्यक्रम बनाने के लिए बाध्य होना पड़ा है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मामले में सरकार के दृष्टिकोण के त्रिविध उद्देश्य हैं। क्षमतायुक्त व्यवहार उपक्रमों का पुनरुत्थान, सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे उपक्रमों को बंद करना जिनका पुनरुत्थान संभव न हो, और सार्वजनिक क्षेत्र के गैर अनुकूल उपक्रमों में सरकारी भागीदारी को कम करके 26% तक उससे कम करना। आकर्षक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना एवं अन्य उपायों के द्वारा कामगारों के हितों की पूर्ण सुरक्षा की जाएगी। इस कार्यक्रम ने पहले ही कुछ आरंभिक सफलता अर्जित कर ली है। सरकार ने इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, भारतीय पर्यटन निवास निगम, IPCL, विदेश संचार निगम लिमिटेड, CMC, बाल्को, हिंदुस्तान जिंक और मारुति उद्योग जैसे उद्यमों में अपनी भागीदारी के पर्याप्त हिस्से का विनिवेश करने का निर्णय लिया है। जहां अनुकूल साझेदारों की आवश्यकता होगी, उनका चयन एक पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा। अर्थव्यवस्था के महत्वाकांक्षी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विद्युत क्षेत्र में सुधार आवश्यक है। देश के अधिकतर भागों में विद्युत क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही कमियों को दूर करने और बिजली को सबके लिए सुलभ बनाने हेतु हमने सन 2012 तक संबद्ध पारेषण एवं वितरण प्रणालियों के सहित
1,00,000 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता संस्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उसके लिए लगभग 8,000 करोड़ रुपए के निवेश की आवश्यकता होगी। विद्युत विनियमन लोग आयोगों को केंद्र तथा राज्यों दोनों में टैरिफ के यथोचित निर्धारण, राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय स्थिति सुधारने और निजी निवेशकों में विश्वास पैदा करने में प्रधान भूमिका निभानी होगी। मैं राज्य सरकारों, सभी राजनीतिक दलों और विद्युत सेवाओं के कर्मचारियों और उपभोक्ताओं से विद्युत क्षेत्र में सुधारों का समर्थन करने का आग्रह करता हूं। आरंभ में इस परिवर्तन से परेशानी हो सकती है, परंतु बाद में ये सभी के लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। इस वर्ष 3 नाभिकीय विद्युत रिएक्टरों को राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ा गया। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने राजस्थान परमाणु विद्युत केंद्र की चतुर्थ इकाई के क्रिटिकलिटी की और सिंक्रोनाइजेशन के बीच मात्र 14 दिन का समय लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। ऊर्जा की कमी को पूरा करने और पर्यावरणीय ह्रास नियंत्रण करने के लिए एक व्यवहार और स्वच्छ विकल्प के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा पर अब सारे विश्व का ध्यान है। हमारा लक्ष्य अगले 12 सालों में नवीनीकरण स्रोतों से 10,000 मेगावाट और उत्पादन करने का है, जिससे संस्थापित होने वाली अतिरिक्त क्षमता में इसका भाग 10% हो जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र के लिए एक दीर्घावधिक नीति बनाने के लिए इंडिया हाइड्रोकार्बन विजन 2025 रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया है। पिछले 18 माह में कच्चे तेल की कीमतों में हुई तीव्र वृद्धि से इस वर्ष हमारा तेल आयल बिल लगभग 80,000 करोड़ रुपए तक बढ़ गया है। इसलिए सरकार अपने देश में कच्चे तेल का उत्पादन और बढ़ाने के लिए एक विशेष उपाय कर रही है। हमने इस वर्ष 25 प्रखंड अन्वेषण के लिए दिए हैं। हमें आशा है कि इस सितंबर तक 25 और प्रखंड दे दिए जाएंगे। हमने रूस स्थित सखालिन 1 ऑयल फील्ड में 20% इक्विटी खरीदकर विदेश में तेल इक्विटी की भी प्राप्त कर ली है। विदेश में ऐसी ही और अन्य तेल इक्विटी प्राप्त करने के लिए प्रयास चल रहे हैं। हमने कृष्णा गोदावरी, थाले के गहरे समुद्र में और कैम्बे क्षेत्र के उथले पानी में तेल और गैस का पता लगाया है। भारत ने इस वर्ष कच्चे तेल के परिष्करण में पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। मुझे आपको ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पिछले वर्ष तेल विपणन कंपनियों ने 12 मिलियन एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए, जबकि लक्ष्य 10 मिलियन का था। एलपीजी कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची समाप्त हो चुकी है और अब ये केंद्रों पर तुरंत उपलब्ध हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराने के व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार कोयला क्षेत्र में प्रगति के लिए एक द्विपक्षीय नीति अपना रही है। कोयला खनन में हम निजी क्षेत्र की भागीदारी को अनुमति देंगे। हम संयुक्त उद्यमों को सुकर बनाकर कोल इंडिया को भी सुदृढ़ बनाएंगे। धनबाद के निकट बागदिगी में हाल में हुई त्रासदी ने कोयला खदानों में सुरक्षा के मामले की तरफ एक बार फिर ध्यान आकृष्ट किया है। सुरक्षा संबंधी अनिवार्यता नवीनतम खनन प्रौद्योगिकी और प्रबंधन तकनीक अपनाकर कोयला क्षेत्र के आधुनिकीकरण के साथ गहन रूप से संबंध है। इसमें विलंब की कोई गुंजाइश नहीं है। दुर्घटना संभावित सभी कोयला खदानों का एक व्यापक पुनर्सर्वेक्षण करने के आदेश दे दिए गए हैं। वस्त्र व्यवसाय एक पारंपरिक उद्योग है। इसमें भारत विश्व में काफ़ी समय तक लाभप्रद स्थिति में रहा है, लेकिन वह स्थिति अब नहीं रही, क्योंकि यह क्षेत्र विश्व बाजार में बढ़ती प्रतियोगिता के अनुरूप अपना पुनर्गठन नहीं कर पाया। इसकी उपेक्षा समाप्त करने और इस क्षेत्र में त्वरित विकास की प्राप्ति के लिए एक नई वस्त्र नीति बनाई गई है। इसका उद्देश्य घरेलू मांग को पूरा करने और सन 2010 तक वस्त्र और परिधान निर्यात वर्तमान 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए अपने देश के वस्त्र निर्माण क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीक युक्त प्रसुविधाओं को बढ़ावा देना है। वस्त्र गुणवत्ता उन्नयन निधि योजना और कॉटन टेक्नोलॉजी मिशन के अलावा दीनदयाल हस्तकरघा प्रोत्साहन योजना जैसी पृथक योजनाएं भी शुरू की गई हैं, जिससे जुलाहों, किसानों और दस्तकारों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। भारत रसायनों और
फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से लाभप्रद स्थिति में है। इस क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए ये प्रस्ताव है कि ऑटोमेटिक रूट के जरिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा वर्तमान 74% से बढ़ाकर 100% कर दी जाए। नई औषध नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिससे कि भारत का फार्मास्यूटिकल उद्योग विश्व में अग्रणी बन सके। पर्यटन उद्योग विश्व में तीव्र गति से बढ़ता उद्योग है। इसकी भारत में अत्यधिक अधोहित संभाव्यता है। सरकार ने राज्यों के समन्वय से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए आधारभूत संरचना में सुधार करने और परंपरागत व अपरंपरागत दोनों प्रकार के पर्यटक स्थलों को विकसित करने के लिए अपने प्रयासों को सुदृढ़ बनाया है। वर्षों की धीमी विकास दर के पश्चात हमारा निर्यात तेज़ी से बढ़ता रहा है। ये अप्रैल और दिसंबर के बीच डॉलर के हिसाब से 20.4% बढ़ा, जबकि पूरे वर्ष के लिए 18% का लक्ष्य था। विदेशी मुद्रा भंडार इस वर्ष 2 फरवरी को 38.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो सुखद स्थिति है। हमारा व्यापार नीति की हमारी उदारीकरण की प्रक्रिया में भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धात्मक सुधार लाने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने तथा लगातार ध्यान दिया जा रहा है। विश्व व्यापक संगठन को दी गई अपनी वचनबद्धता के अनुसार अप्रैल में ज़्यादातर मात्रात्मक प्रबंधों को हटाते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यह परिवर्तन भारतीय कृषि और उद्योग, विशेषकर लघु उद्योग क्षेत्र के किसी के लिए कष्टदायी न हो। मुंबई, कांडला, सूरत और कोची स्थित विद्यमान निर्यात संवर्धन अंचलों को विशेष आर्थिक अंचलों में बदल दिया जाएगा। ऐसे एक नए अंचल 9 अन्य स्थानों पर भी स्थापित किए जाएंगे। लघु उद्योग क्षेत्र का हिस्सा औद्योगिक उत्पादन में 38% और प्रत्यक्ष निर्यात में 35% से ज़्यादा है। हमारे लघु और अति लघु क्षेत्र के लिए एक विस्तृत नीतिगत पैकेज तैयार किया गया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के पुनर्गठन और आधुनिकीकरण की योजना भी तैयार की जा रही है। देशी और विदेशी बाजारों में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के उत्पादों को कारगर ढंग से बढ़ावा देने के लिए एक सामान्य ब्रांड नाम सर्वोदय शुरू किया गया है। अत्यधिक प्रतिस्पर्धी विश्व बाजार में भारत के समक्ष आ रही कड़ी चुनौतियों को देखते हुए ये बात ज़्यादातर स्वीकार की जा रही है कि हमारे कुछ श्रम कानूनों में होने वाले संशोधनों को अब और टाला नहीं जा सकता। ये संशोधन वास्तव में श्रम अनुकूल हैं, क्योंकि इनसे संगठित तथा असंगठित दोनों क्षेत्रों में रोजगार के और अधिक अवसर उत्पन्न होंगे। वे व्यवसायिकों को विद्यमान यूनिटों के विस्तार और नई यूनिटों अर्थात दोनों में निवेश के अवसर प्रदान करके तीव्र आर्थिक विकास में आने वाली अड़चनों को हटाकर ऐसा करेंगे। उदाहरण के तौर पर भारत वस्त्र, हल्की इंजीनियरिंग, खिलौने, दस्तकारी, चमड़ा जैसे श्रम प्रधान उद्योगों तथा सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं संबंधित अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने एक विशेष स्थान बना सकता है। सरकार ऐसे उद्योगों में बड़े पैमाने पर निवेश को प्रोत्साहित करेगी तथा उनके द्रुतगामी विकास के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना उपलब्ध कराएगी। सरकार इन अत्यावश्यक श्रम सुधारों को लागू करते हुए यह संकल्प करती है कि वह श्रमिकों के कल्याण के प्रति अपनी वचनबद्धता को किसी भी प्रकार शिथिल नहीं होने देगी। नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए श्रमिकों को प्रशिक्षण और पुनर्प्रशिक्षण के कार्यक्रमों का विस्तार किया जाएगा। उनकी उद्यमशीलता के विकास तथा स्वरोजगार की सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का क्षेत्र बढ़ाने तथा लाभों के उदारीकरण के लिए पहले ही कई उपाय किए जा चुके हैं। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के निर्धन परिवारों तथा असंगठित श्रमजीवी वर्ग के लाभ हेतु जून 2000 में जनश्री बीमा योजना शुरू की गई। श्रम मंत्रालय खेतीहर मजदूरों के लिए एक व्यापक समाज कल्याण योजना पर विचार कर रहा है। यह देश के श्रमिक वर्ग का सबसे बड़ा हिस्सा है। जिन राज्यों में बाल मजदूरी की प्रथा अब भी मौजूद है, वहाँ हम शिक्षा के माध्यम से पुनर्वास पर योजना प्रारंभ करना चाहते हैं। इसमें बालिकाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारत का भविष्य बनाने के लिए में शिक्षा, विशेषकर बालिकाओं की शिक्षा सर्वाधिक लाभप्रद निवेश है। सभी को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए एक समेकित राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया है। इसके लिए एक राष्ट्रीय मिशन गठित किया गया है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। इसका उद्देश्य सन 2010 तक
14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को गुणवत्ता वाली 8 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम का स्वामित्व और प्रबंधन स्थानीय लोगों के हाथों में रहेगा। इसमें शिक्षा की वैकल्पिक विधियों द्वारा बालिकाओं और सुविधा वंचित समूहों पर विशेषतया ध्यान दिया जाएगा। सरकार व्यावसायिक रूप की शिक्षा देने और युवा वर्ग को इस योग्य बनाने के लिए उपाय करेगी कि वे स्वयं अपने काम धंधे और स्वरोजगार के लिए नए उपक्रम शुरू करें। हमारे समाज के सभी कमज़ोर वर्गों के तीव्र सामाजिक आर्थिक विकास के प्रति मेरी सरकार मूलतः वचनबद्ध है। हम अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, सफाई कर्मचारियों तथा अल्पसंख्यकों के लिए वित्त तथा विकास निगमों को और कारगर बनाने के लिए बहुत से कदम उठा रहे हैं। आय उपार्जित करने वाले उद्यमों, स्वरोजगार कार्यों तथा हुनर एवं प्रतिभा को बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान करने हेतु और सुविधाएं दी जाएंगी। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के निर्धनों की आर्थिक उन्नति के लिए स्वावलंबी विशेषतया महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे समूहों को दिए जाने वाली अल्प ऋण के दायरे को बढ़ाया जा रहा है। सरकार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए कृत संकल्प है। किसी राष्ट्र की संपदा मुख्यतः उसके नागरिकों का स्वास्थ्य है। विगत में किए गए प्रयासों के सकारात्मक एवं नकारात्मक परिणामों को ध्यान में रखते हुए एक नई स्वास्थ्य नीति सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधा के रूप में अभी तक अप्राप्त लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए शीघ्र ही घोषित की जाएगी। इन उपयोगी कार्यक्रमों में से एक पिछले माह समाप्त हुआ पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान था, जो अत्यधिक सफल रहा। सरकार लोक स्वास्थ्य के क्षेत्र में अन्य बड़ी चुनौतियों जैसे मलेरिया, काला आजार और HIV एड्स की महामारी से निपटने के लिए यथासंभव रूप से अधिकाधिक सरकारी और गैर सरकारी संसाधन जुटाकर शीघ्र ही इसी तरह के और राष्ट्रीय अभियान शुरू करेगी। हमने कुष्ठ रोग को समाप्त करने की दिशा में पर्याप्त प्रगति की है। क्षय रोग के लिए अपनाई गई प्रत्यक्षता अवलोकित रोग उपचार अल्पावधिक नीति के अंतर्गत 300 मिलियन से अधिक लोगों को चिकित्सा प्रदान की गई, जबकि 2 वर्ष पहले 20 मिलियन को ये चिकित्सा मुहैया कराई गई थी। जब से इसे लागू किया गया है तब से अब तक लगभग 70,000 जानें बचाई गई हैं। नाबालिगों को निकोटीन का आदी होने से बचाने के लिए मैं सरकार द्वारा सभी प्रकार के तंबाकू विज्ञापनों एवं प्रयोजनों को प्रतिबंधित करने के लिए विधान बनाए जाने व किए गए अन्य प्रयासों की प्रशंसा करता हूँ। हमने मानव जीन पर आधारित चिकित्सा अनुसंधान शुरू किया है ताकि आधुनिक विज्ञान के इस तेज़ी से उभरते हुए नए क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाया जा सके। आयुर्वेद, होम्योपैथी, सिद्ध, यूनानी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों में प्रतिरोधक, प्रोत्साहक और रोगनाशक उपचार बड़ी संख्या में हैं, जो किफ़ायती और कारगर दोनों ही हैं। हम अपनी राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिचर्या कार्यनीति में इन महत्वपूर्ण प्रणालियों की लंबे समय से चली आ रही उपेक्षा को समाप्त करने के लिए कार्य कर रहे हैं। देशी और विदेशी दोनों बाज़ारों के लिए जड़ी बूटी संबंधी उत्पादों की खेती, प्रसंस्करण, उत्पादन और मानकीकरण को बढ़ावा देने हेतु एक राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड गठित किया गया है। इस विषय के हमारे परंपरागत ज्ञान के संरक्षण के लिए भी उपाय किए जा रहे हैं, जिससे आने वाले वर्षों के दौरान व्यापक स्तर पर विश्व का ध्यान आकर्षित होने की आशा है। हमारे शहरी क्षेत्रों के जीवन की गुणवत्ता में हो रहा ह्रास गंभीर चिंता का विषय है। हमें पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ, आर्थिक रूप से प्रभावी, सामाजिक रूप से उचित, सांस्कृतिक रूप से जीवंत तथा क्षेत्रीय रूप से संतुलित शहरी विकास की आवश्यकता है। इस संबंध में सरकार राज्य और स्थानीय स्वशासी निकायों के सहयोग से नीतियां तैयार करेगी। हुडकों की सहायता से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष 20 लाख अतिरिक्त आवासीय मकानों के निर्माण कार्यक्रम की प्रगति संतोषजनक है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना और राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रमों से शहरी गरीबी के उन्मूलन तथा गरीबी के लिए आश्रय की व्यवस्था करने में बहुत सहायता मिलेगी। बार बार सूखा पड़ने, बाढ़ आने, भूमिगत जल स्तर में गिरावट आने तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पेयजल की कमी ने जोरदार ढंग से हमें यह स्मरण कराया है कि हम अपने जल संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रबंध शुरू नहीं करते तो हमें भविष्य में अधिक गंभीर संकट का सामना करना पड़ेगा।
वर्ष 1987 में राष्ट्रीय जल नीति को बनाए जाने के बाद हमारे जल संसाधनों के विकास और प्रबंधन में अनेक समस्याएं उभर कर आई हैं। इसलिए राष्ट्रीय जल नीति का संशोधित रूप तैयार किया गया, जिस पर पिछले वर्ष जुलाई में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की चौथी बैठक में चर्चा की गई। इस संबंध में उभरे मतभेदों को सुलझाने के लिए मंत्रियों का एक कार्यदल गठित किया गया है। सरकार विभिन्न प्रयोगकर्ता समूहों की सक्रिय भागीदारी से जल संरक्षण के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शीघ्र ही शुरू करेगी। आपको सूचित करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि भारतीय वन सर्वेक्षण की वर्ष 1999 की रिपोर्ट से ये पता चला है कि हमारा वन क्षेत्र 1997 में किए गए पिछले निर्धारण के बाद से 3,896 वर्ग किलोमीटर बढ़ गया है। भारत का अंतरिक्ष विज्ञान में तीव्र प्रगति करना जारी है। पिछले वर्ष अपने यहाँ विकसित क्रायोजेनिक इंजन का प्रथम परीक्षण किया जाना हमारी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च कैपेबिलिटी के विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हमारे नवीनतम इनसेट 3B की सहायता से स्वर्ण जयंती विद्या विकास अंतरिक्ष उपग्रह योजना शुरू की जाएगी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विकास संबंधी शिक्षा प्रदान करना है। 2 जैव विज्ञान नेशनल साइंस और टेक्नोलॉजी मिशन शुरू किए गए हैं। पहला कृषि जैव विविधता के संरक्षण और दूसरा घरेलू खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के संबंध में है। न्याय विभाग मुकदमों में होने वाले लंबे विलंब को कम करने के लिए विभिन्न प्रक्रियात्मक और मूल विधि की समीक्षा कर रहा है। इस प्रयोजन के लिए 2 विशिष्ट योजनाएं शुरू की गई हैं। पहली योजना में काफ़ी समय से लंबित मामलों के शीघ्र निपटाने के लिए 1734 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की स्थापना करना शामिल है। दूसरी 4 महानगरों में न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण और नेटवर्किंग की एक प्रायोगिक योजना है। यह जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए मॉडल के रूप में काम करेगी। सरकार वर्तमान तथा अतीत को जोड़कर भारतीय संस्कृति की रचनात्मक भावना को और सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। हमने अपनी समृद्ध और विविधतापूर्ण सांस्कृतिक विरासत की देखभाल के लिए राष्ट्रीय संस्कृति निधि के माध्यम से सार्वजनिक और निजी संस्थाओं की समान सहभागिता को सुकर कर बनाने के लिए अभिनव पहल की है। हमने अन्य देशों से सांस्कृतिक और खेल संबंध बढ़ाने के लिए भी प्रयास तेज कर दी है। भारत नवंबर में प्रथम एफ्रो एशियन खेलों का आयोजन करेगा। निरंतरता राष्ट्रीय सहमति की मजबूत नींव पर आधारित भारत की विदेश नीति को बदलते विश्व परिदृश्य के अनुरूप बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ये मानने लगा है कि शांति प्रिय, समृद्ध, सुदृढ़ और पुनरुत्थानशील भारत एशिया में विश्व में शांति, स्थायित्व और संतुलन के लिए एक विश्वसनीय आधार है। हमारी विदेश नीति का मुख्य दृष्टिकोण दूसरे देशों के साथ शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना है। इससे हम राष्ट्र निर्माण पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। इस दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना है। वस्तुतः पाकिस्तान के सिवाय अन्य सभी पड़ोसियों के साथ हमारे संबंध प्रगाढ़ बने हैं। भारत और नेपाल के बीच घनिष्ठ संबंध हैं। दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में व्यापक पारस्परिक संपर्क है। प्रधानमंत्री श्री गिरिजा प्रसाद कुरेला पिछले वर्ष जुलाई में भारत आए और द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए दोनों देशों ने उनकी विस्तृत पुनरीक्षा की। अभी हाल ही में निहित स्वार्थों द्वारा बाधा पहुंचाए जाने के बावजूद यह प्रक्रिया भविष्य में भी ऐसी ही चलती रहेगी। भूटान और मालदीव की प्रगति में भी हमारी प्रबल रुचि है तथा एक दूसरे के प्रति सम्मान तथा आपसी विश्वास के अपने संबंधों में लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा। भारत आशा करता है कि अशांत अफगानिस्तान में शांति की बहाली जल्द होगी तथा वहाँ की जनता बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप तथा धार्मिक उग्रवाद के स्वयं अपना भाग निर्मित करेगी। अपने पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय सहयोग का केंद्र बिंदु आधारभूत व्यवस्था संबंधी संपर्कों में सुधार करना भी है। अपने घनिष्ठ सहयोग और लोगों के आपसी संबंधों को और बढ़ाने के लिए बांग्लादेश के साथ तीसरा ब्रॉड गेज रेल संपर्क अभी हाल ही में पुनः शुरू किया गया है। भारत श्रीलंका मुक्त परिवार व्यापार करार को लागू करने के लिए से आशा है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों में काफ़ी वृद्धि होगी। हम इसी सप्ताह के अंत में राष्ट्रपति चंद्रिका भंडारनायके के कुमारतुंगा का दिल्ली में स्वागत करने और अपने उत्कृष्ट द्विपक्षीय संबंधों पर उनके साथ व्यापक समीक्षा करने की उत्सुकता से प्रतीक्षा में हैं। भारत की सहायता के म्यांमार के साथ सड़क संपर्क
दोनों देशों की बीच यात्रा को सुगम और व्यापक को सुकर बनाएगा। पिछले वर्ष की मेरी चीन यात्रा तथा अभी हाल ही में चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री ली पेंग की भारत यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों में और सुधार हुआ है। हम पंचशील और एक दूसरे के मसलों में परस्पर संवेदनशीलता बरतने के आधार पर चीन के साथ मैत्रीपूर्ण तथा अच्छे पड़ोसी संबंध बनाने के लिए वचनबद्ध हैं। भारत की लुक ईस्ट नीति के तहत प्रधानमंत्री ने गत माह वियतनाम तथा इंडोनेशिया की सफल यात्राएं की। मैंने नवंबर 2000 में सिंगापुर राज्य की यात्रा की। इंडो चाइना तथा दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंध घनिष्ठ और सुदृढ़ हैं। इस क्षेत्र के देशों के साथ जो हमारे पड़ोसी समान ही हैं, आर्थिक तथा लोगों के आपसी संबंधों को बढ़ाने की काफ़ी गुंजाइश है। इस प्रयास में मेकॉन्ग गंगा सहयोग पहल एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पिछले वर्ष अगस्त में जापान के प्रधानमंत्री श्री योशिरो मोरी की ऐतिहासिक यात्रा के दौरान हमने 21वीं शताब्दी में विश्वव्यापी साझेदारी बनाने पर सहमति प्रकट की है। इस वर्ष के अंत में हम कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति श्री किम डाई जंग की भारत यात्रा की उत्सुकता से प्रतीक्षा में हैं। हमारे मध्य एशियाई देशों के साथ ऐतिहासिक सांस्कृतिक रूप से प्रगाढ़ संबंध हैं तथा उनके साथ अपने संबंधों को और सुदृढ़ करने को अधिक महत्व देते हैं। पश्चिम एशिया और खाड़ी देशों के साथ हमारे संबंध कई शताब्दियों पुराना सभ्यता से चले आ रहे हैं और हम इस क्षेत्र के सभी देशों के साथ अपने संबंधों का सम्मान करते हैं। मध्य पूर्व महत्वपूर्ण शांति प्रक्रिया में गतिरोध, बल के अत्यधिक प्रयोग और हाल ही में हुई हिंसा पर हम गहरी चिंता व्यक्त करते हैं। हम ये विश्वास करते हैं कि फिलिस्तीन तथा इजराइल समेत क्षेत्र के सभी राष्ट्रों को सुरक्षित तथा अंतर्राष्ट्रीय रूप से सामान्य सीमाओं में रहने का अधिकार है। रूस के साथ समय की कसौटी पर खरी उतरी हमारी मैत्री अक्टूबर के दौरान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यात्रा से और अधिक सुदृढ़ हुई, जब हमने एक नई शताब्दी में भारत रूस संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश तथा तय करके नीतिगत साझेदारी घोषणा पर हस्ताक्षर किए। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत के निरंतर मजबूत होते संबंध हमारे विदेश संबंधों का एक महत्वपूर्ण नया आयाम है। राष्ट्रपति क्लिंटन की भारत यात्रा तथा पिछले वर्ष प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा ने हमारे संबंधों के इस नए दौर की मजबूत नींव रखी है। मैं सिलिकॉन वैली के भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी व्यवसायिकों तथा वास्तव में संपूर्ण भारतीय अमेरिकी समुदाय की उसकी शानदार सफलता पर सराहना करता हूँ। उन्होंने भारत के प्रति न केवल अमेरिका के बल्कि विश्व के नज़रिए को बदला है। हम मजबूत तथा पारस्परिक हितकर द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए जॉर्ज डब्ल्यू बुश प्रशासन के साथ लगातार प्रयासरत हैं। पिछले वर्ष जून में प्रधानमंत्री की पुर्तगाल यात्रा के दौरान लिस्बन में संपन्न हुई सर्वप्रथम भारत यूरोपीय शिखर वार्ता से यूरोपीय संघ के साथ भारत की नीतिगत साझेदारी में उल्लेखनीय प्रगति हुई। इसके तहत हमारे राजनीतिक, आर्थिक तथा वाणिज्यिक विनिमय को बढ़ाने के लिए हमें विश्वास है कि यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली तथा अन्य यूरोपीय देशों के साथ हमारे सौहार्दपूर्ण संबंधों को नए आयाम मिलते रहेंगे। भारत पूर्वी तथा मध्य यूरोप के देशों के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों को और सुदृढ़ कर रहा है। इनमें से कई देशों के साथ उच्च स्तरीय विचार विनिमय किए जाने की योजना है। अफ्रीकी देशों के साथ हमारे संबंध प्रगाढ़ रूप से मैत्रीपूर्ण हैं और विकासशील देशों के हितों के प्रति हम सभी समान रूप से सजग हैं। इंडियन ओशन रिम भारत और दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीका देशों के साथ अधिक घनिष्ठ सहयोग की संभावनाएं प्रदान करता है। प्रधानमंत्री सर अनिरुद्ध जगन्नाथ की हाल की भारत यात्रा से मॉरीशस से हमारी घनिष्ठ मैत्री और प्रगाढ़ हुई है। मैं उनके राष्ट्रीय दिवस समारोह के अवसर पर वहां जाने की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा हूं। अल्जीरिया के राष्ट्रपति श्री अब्दुल अजीज बोतफ्लिका का इस वर्ष के गणतंत्र दिवस पर परेड के अवसर पर मुख्य अतिथि थे। नाइजीरिया के राष्ट्रपति श्री ओलुसेगन ओबासंजो की यात्रा से इस महत्वपूर्ण अफ्रीकी देश के साथ हमारे संबंध और सुदृढ़ हुए हैं। हम मोरक्को के शासक महामहिम मोहम्मद 6 की इस माह के अंत में भारत यात्रा की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम लैटिन अमेरिका के देशों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने और कैरिबियन देशों और राष्ट्रमंडल के अन्य सदस्यों के साथ अपने परंपरागत घनिष्ठ संबंधों को और प्रगाढ़ करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। फिजी के बहुजातीय समाज में लोकतंत्र का दमन हमारे लिए गहरी चिंता का विषय बना हुआ है।
भारत फिजी में भेदभाव रहित लोकतंत्र की शांतिपूर्ण बहाली के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर कार्य करेगा। संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी शिखर सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने यह सहमति जताई है कि भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में सभी का समावेश हो तथा वह न्यायोचित हो। इसमें सीमा पार आतंकवाद सहित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, हथियारों और नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार, धार्मिक कट्टरपन और सैन्य दुस्साहस की भी निंदा की गई। आतंकवाद के विरुद्ध एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शीघ्र बुलाए जाने की भारत की मांग का समर्थन किया गया। अधिकाधिक देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण और उत्तरदायी बनाने की मांग करने लगे हैं। सुरक्षा परिषद के प्रस्तावित विस्तार की स्थिति में उसकी स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी को भी अधिकाधिक समर्थन मिल रहा है। हम विश्वव्यापी, व्यापक और भेदभाव रहित नाभिकीय निशस्त्रीकरण की अपनी मांग को दोहराते हैं। साथ ही हमारी सुरक्षा आवश्यकताएं हमें इस उद्देश्य की प्राप्ति होने तक आत्मरक्षा हेतु एक विश्वसनीय न्यूनतम नाभिकीय शस्त्र अपने पास बनाए रखने के लिए बाध्य करती है। मेरी सरकार ने विदेश में रहने वाले भारतीयों के साथ अपने विविध संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण पहल की है। उनकी संख्या 20 मिलियन है तथा वे सारे विश्व में फैले हुए हैं तथा वे जिन देशों में बसे हैं उनके साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से रहते हुए उन्होंने अपनी मातृभूमि के साथ भी घनिष्ठ सांस्कृतिक, आर्थिक और आध्यात्मिक संपर्क बनाए रखे हैं। भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए नीतिगत सिफारिशें सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की गई है। माननीय सदस्यगण, आज आप बजट सत्र पर शुरू कर रहे हैं। रेल तथा आम बजट से संबंधित वित्तीय कार्यों के अलावा पर्याप्त विधायी कार्य भी इस सत्र में किया जाना है। 2 अध्यादेशों के स्थान पर विधेयक बनाने की भी आवश्यकता है। यह सभी कार्य मूल रूप में हमारे देश के सर्वांगीण तथा तीव्र सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़ा है। लोगों ने आपको चुना है। उन्हें आपसे बहुत आशा है कि संसद के बहुमूल्य समय का सर्वोत्तम उपयोग निर्धारित कार्य को पूरा करने में किया जाएगा। मैं आपके प्रयासों की सफलता के लिए कामना करता हूँ। जय हिंद। President K.R. Narayanan exchanging a few words with Prime Minister Atal Bihari Vajpayee at the conclusion of his address to this joint sitting of Parliament, and exchanging greetings with other members as well. He's being led out now of the ceremonial procession out of the Central Hall of Parliament. With this, we mark the commencement of the budget session of Parliament, a session which will see many important pieces of legislation coming up, including the Women's Reservation Bill, the Lokpal Bill and other
bills which were put before the last session and which could not be enacted. There will of course be discussion and debate about the Gujarat earthquake tragedy and what is to be done to rehabilitate the state and its people. And of course the climax of this session will be the presentation on the 26th of February by Railway Minister Mamata Banerjee of the railway budget, followed by the presentation on the last day of the month at 11 o'clock of the general budget by Finance Minister Yashwant Sinha. सुनीत, वैसे तो संसद के दूसरे सत्र भी होते हैं, लेकिन बजट सत्र से आम आदमी बिल्कुल सीधा जुड़ा होता है। उसकी आशाएं, उसकी निगाहें इस बजट पर सीधी जुड़ी होती हैं। भारत की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था में भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और यही कारण है कि विदेशी पूंजीपति, आर्थिक संस्थाएं बेसब्री से इस बजट का इंतज़ार करते हैं। इसका उद्देश्य है खर्च को नियमित करके आय के नए आयाम को ढूंढ लेना, जिससे कि आम आदमी पर भार ना पड़े और उद्योगों को बढ़ावा मिले और देश उन्नति करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मनीषा दुबे अपने साथी कमेंटेटर सुनीत